Good morning, class. Today we are going to start the lesson number 12, Introduction to Acid and Base. First, you try to understand what is acid. Acid, the substance which is sour in taste, is called acid. I repeat the definition again. The substance which is sour to taste is called acid. Its main constituent means इसका main part जो होता है that is H plus ions. H plus ions means hydrogen ions. And in the base, the substance which is bitter to taste is called base. The main constituent of base is OH minus ions. OH minus means the hydroxide ions. For example, in acid you can write the examples like HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, KNO3 nitric acid, like that. And in base you can write like NaOH sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. They are the examples of acid and base. Understood? So there are some properties of acid and base, properties and uses of acid and base, that I will send you the pictures. You have to write in your notebook. Now, second thing is indicator. How we can determine indicator is a substance which is help us to identify the given solution is acid or base. See the definition. The substances which change their colors in presence of acid or base are called indicators. For example, litmus paper, methyl orange, phenolphthalein, methyl red, so many are there. In that, this litmus paper are two types, red litmus paper and blue litmus paper. अभी इसका यूज़ करके हम लोग कैसे मालूम पड़ेंगे कि गिवन सोल्यूशन एसिड है या बेस. फॉर एग्जांपल आपने रेड लिटमस पेपर लिया, ओके, तो इफ़ इन द सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, दैट मीन्स वो एसिड है. अगर रेड का रेड ही रहता है तो ब्लू. सेम ईयर मिथाइल ऑरेंज, it also in acid it will turns in a pink means acid. और अगर ये पिंक से रेड हो जाता है then we will say that is the base. Same here phenolphthalein also, it will also change its color. वैसे नॉर्मली phenolphthalein का कोई कलर नहीं होता है. phenolphthalein is a colorless, but when you use in the acid it will changes its color. एसिड और बेस में अलग अलग कलर बनेगा उसका यूज़ करके. दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि इनका यूज़ करके वी कैन फाइंड द एसिड और बेस. सो दे आर द इंडिकेटर्स. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज गिवन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस न्यूट्रलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन इज टाइप ऑफ रिएक्शन in which acid and base react together to form a salt and water. See the definition. The chemical reaction in which acid and base combine or react together to form a salt and water is called neutralization reaction. The chemical reaction in which acid and base react together to form a salt and water is called neutralization reaction. See, it's a general reaction. General reaction में क्या रहेगा? acid and base, it gives salt and water. Examples दिया है. एक examples है HCl means hydrochloric acid. hydrochloric acid. NaOH sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये एसिड है, ये बेस है. बोथ आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म NaCl सोडियम क्लोराइड. देखो
इस बेस से Na लिया है और एसिड से Cl लिया है, दोनों एक साथ रिएक्ट हुए, सोडियम क्लोराइड बना है। सोडियम क्लोराइड इज़ आवर कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता है ना जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ सोडियम क्लोराइड। एंड वाटर, अभी यहाँ से एक H बचा है, इधर से HO बचा है, तो 2 H हो गया, H2O इज़ अ वाटर। Understood the neutralization reaction? Okay, so the lesson number 12 is very easy, short lesson is there. Acid base, their introduction, indicators, properties of acid and base, uses of acid and base, then neutralization reactions. Properties and uses, I will send you a picture of that.